Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. And today I am going to upload a very important practical of Visual Basic, that how to can create a calculator by using the Visual Basic program. First of all, we will just create form, and after that we will just do some coding, and then I will execute the calculator properly. But I'm not going to skip some steps if you face some difficulties while you just do coding, and then if you face some difficulties while you type the coding in which way you need to enter the code, I'm not going to skip it. I will just show all the errors and how to remove such kind of bugs from the program. So let's start it. First of all, just go to the Visual Basic, open it, and click on the open exe, and here you will just find the form. Just expand or maximize this form, and then we need a text box here to enter the first number. So I'm going to make it, and after that insert one more to enter the second number here. So this is the second text box. We just place this under the first text box and just increase the size accordingly. So be careful while you just click on that, because the property box or coding box will be opened if you just click directly on the text box. So just be careful. So just drag this like this. I'm just dragging it, and now just expand it. Here we have two text boxes to write the two values. Just like if you want to do calculation, you will enter the value in the first text box and second, and then command. Command means you are going to press this button and you will get answer. But where you are going to get answer, you need to put another text box here. This is for answer. So simple. You can just add more things as well, if just like labels and to highlight the functions of these things. But I am just going to do it in a short way and a smart way. So just place this text box somewhere where you want to put it. Here. And now I'm just going to change the property. Click on the first text box. If the property is not appeared, then the method is to appear the property. Right click and click on the properties. A window will be displayed like this. Just type on here uh, text first number, because we are going to enter the first number in this text box. So that is why this is the coding for the text box. Always write the first word capital if you are just writing, and don't get the space. So this is the property of the text box 1. Write the text box 2. Now change the property of the text box to text second number, because we are going to enter the second number here in this text box. So do this, and after that we are going to change all the properties of all the things like command and the rest of the text boxes as well. So just do it with a sequence. Just click on the command and type here the property of the button, because the property of the button is different than all other text boxes. So right here CMD means command and sum. When we click on this button, you will get the answer where in the third text box. So that is why I'm just writing on changing the property of the text box 3 txt sum, because we are getting the result here. So this is click on the command button, and here you are going to write down the coding. First of all, dimension. Dimension is a keyword to operate number 1 and number 2. We are defining here that number 1 and number 2, and sum as an integer. Integers means we are going to enter the result in the form of number. So just do it. And after that, the second thing is नंबर 1 जो है उसमें हम ये कर रहे हैं कि नंबर 1 इज इक्वल क्या है उसमें वैल्यू. वैल हम इसलिए लगा रहे हैं कि हम इसमें नंबर एंटर करना चाह रहे हैं, तो हम इसमें नंबर एंटर कर सकते हैं. एनीथिंग यू कैन एंटर बाय पुटिंग द वैल. तो हेयर वी आर एंटरिंग टेक्स्ट फर्स्ट नंबर, जो हमने पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स की जो कोडिंग की थी ना, वो हम यहाँ एंटर कर रहे हैं. उसके बाद वी आर गोइंग टू एंटर द नंबर 2, एंड इट इज़ लाइक अ वेल एंड टेक्स्ट. अब यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की है, आप देखिएगा, हाईलाइट कीजिएगा क्या मिस्टेक है, जो कि हमने प्रॉपर्टीज़ में जो चीज़ की थी वो डिफरेंट है. तो वी विल आई एम नॉट गोइंग टू स्किप द पोर्शन वेयर इट विल एग्जीक्यूट विद द एरर. हम सम करते हैं इसको, मीन्स हमने प्लस करना है, जैसे कि n1 प्लस n2 हो गया. जब ये हमने कर लिया तो उसके बाद हमने कोडिंग यहाँ पर लिखनी है कि इसका रिजल्ट कहाँ पे शो होगा हमारे पास. टेक्स्ट सम डॉट टेक्स्ट, और लास्ट पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं सम. तो हमें बटन प्रेस करने के साथ हमें इसका आंसर मिल जाएगा. तो ये जो कोडिंग है ये हमारे बटन के ऊपर चलेगी. अब ये वर्क इसलिए नहीं करेगा बिकॉज यहाँ पे मेरी एक मिस्टेक आ रही है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू एंटर द नंबर हियर, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड आउट द बग्स, and it will just instruct you that remove the bugs and then do the work on it. Okay,
So I'm going to enter the numbers here, 42, and in the second text box you are going to, you can erase all these things and you can just add these things as a blank, you can say. So command here is runtime error है, आप देखें कहाँ पे error है, यहाँ पर है n1 वेल टेक्स्ट फर्स्ट नंबर डॉट टेक्स्ट, क्या चीज़ एरर की है, हम इसको दोबारा से चेंज करके देखते हैं, हम इसको कैपिटल में करते हैं, बट फिर भी ये एरर देगा आपको। इसमें क्या चीज़ है, यू आर गोइंग टू अप्लाई और फॉलो द कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ दिस थिंग एज यू जस्ट डिड इन योर प्रॉपर्टी, यू नीड टू राइट डाउन in the same way, but if you are not writing it, it will just give you the bugs here, and it's really difficult to find out the exact error from this program. So just do it properly and write down the proper coding you have entered in the properties of that thing. So text, and then you just check it. Let's see what is the mistake. Just do write in your comment that what is the mistake here. I am going to write down again the things here, like text first number, text second number. I'm just going to enter the things like this. But after that, I'm just going to tell you that what is mistake, where is the mistake. वैल्यू का मैं आपको बता रही हूँ, वैल जो है वैल्यू को डिफाइन करता है, जिसमें हम लोग अगर आपने प्लस माइनस या कोई भी ऐसा ऑपरेशन करना है कि जिसमें आप नंबर इस्तेमाल कर रहे हो, तो वी नीड टू पुट द वैल कमांड। वैल कमांड इसलिए होती है कि आपने कोई भी वैल्यू एंटर कर देनी है, मींस यू कैन एंटर एनीथिंग, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अभी भी मिस्टेक आ रही है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट पे चले जाते हैं। ये समटाइम्स ये होता है कि समटाइम्स यू आर जस्ट गोइंग टू राइट डाउन द करेक्ट प्रोग्राम, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है आपके, समटाइम प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है उसमें इशू आ जाता है, बिकॉज ये प्रोग्राम काफ़ी ओल्ड है, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू समटाइम्स रन टाइम एरर आएगी आपकी। आपको इसकी एरर को फाइंड आउट करने का मेथड ये है कि जब आप टेक्स्ट फर्स्ट नंबर डॉट टेक्स्ट लिखेंगे ना, नेक्स्ट वाला टेक्स्ट लिखेंगे, तो नीचे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जानी चाहिए, और उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या होता है, यू नीड टू चूज़ द थिंग्स लाइक, ये देखें अभी हमने इसको रन किया है तो ये हो गया है, क्योंकि हमने टेक्स्ट का ई लगाया हुआ था, टी एक्स टी बेसिकली हमने वहाँ पे किया हुआ है, तो ये कैलकुलेटर फंक्शन कर रहा है अभी आपका। आपने यहाँ पर टी एक्स टी फर्स्ट नंबर करना है, टी ई एक्स के साथ नहीं करना, बिकॉज हमारी प्रॉपर्टी में ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होती है। यहाँ पर टी एक्स टी फर्स्ट नंबर डॉट टेक्स्ट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस मेकिंग द कैलकुलेटर थ्रू द विजुअल बेसिक, एंड इफ़ यू फाइंड समटाइम्स errors like this, so just remove it by putting the right code and right properties of the specific option, like specific tools. Thank you so very much, and Allah Hafiz.